रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपको बेहद खास मेहमानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल अचीव किया है और जिनकी लाइफ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आज के मेहमान बहुत खास हैं। इनके 2 रेस्टोरेंट हैं, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, साथ ही साथ एक गौशाला चलाते हैं, एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जेसीआई जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज संदीप मोराजकर जी के साथ, जो गोवा में आनंद नाम से 2 रेस्टोरेंट चलाते हैं और साथ ही साथ कई एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। Namaskar, thank you so much for inviting me and it's pleasure to be with you, Danish. संदीप जी, tell us a bit about yourself. आपकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में, बचपन कैसा था आपका, बेसिकली कहाँ से हैं? मैं, आप सबको पता है कि आई एम फ्रॉम गोवा। गोवा से हूँ मैं और गोवा में एक फेमस जगह है टूरिज्म के लिए, कलंगुट बीच, और वही मेरी जन्मभूमि है एंड आई बिलोंग टू दैट प्लेस। और वो टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेस है, जगह है, और जो भी गोवा में आता है उनको कलंगुट आना ही है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी द बेस्ट बीच। एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी द बेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद द चाइल्डहुड वाज वेरी हैपनिंग एंड it was indeed exciting also at the same time, क्योंकि that time nature was keeping it so nice because we were kind to, and lot of virginity there, lot of trees around, the hill was there. तो बचपन बहुत अच्छी तरीके से गुजरा, going to the forest, going to the hill, having coconut water, trying to pluck coconuts. So बहुत ही बढ़िया, playing football, cricket, all the possible games. प्राइमरी एजुकेशन में तो स्टेट लेवल तक रनिंग एंड अदर थिंग्स में भाग लिया था। दो आई वाज partially sight, but never. Were you aware it leads to blindness? I was not aware because when I went to school it must have been like 69, 70. वो टाइम तो ओरिएंटेशन ही नहीं होता था. And I was operated first time for congenital cataract at the age of 6 months and 1.5 years. So imagine it, in 1965 what would be the situation of जो भी medical अपना medicine था. फिर भी whatever it is, उसके बाद तो 22 साल partial sight में निकाले और उसके बाद तो ये दिक्कत आ गई of retinal detachment. Then it was slowly but surely very bad, or hardly there is any vision, or I'm even sometimes I feel there is a little bit of light perception, but okay, I mean. ये कब पता चला आपको, कब पता चला कि अब साइट काफी आपकी डिटीरिएट हो गई है? एक्चुअली मैं ठीक ग्लासेस पहन के गाड़ी भी चलाता था, बाइक भी चलाता था. So I was going to my capital city कलंगुट से, तो on my bullet मुझे लगा कि थोड़ी शेडोज आ रहे हैं आईज में और दिक्कत हो रही है देखने में, तो साइड में लिया गाड़ी, चश्मा निकाला, वाइप किया, लेकिन ऐसे देखा तो कुछ भी नहीं होता था. आई कॉल्ड माय फ्रेंड, तो वो टाइम पता चला. एंड देन वी जस्ट बिकॉज माय प्यूपल्स बीइंग वेरी स्मॉल, तो मुझे बॉम्बे जब भी मैं आया तो वहां पे they said we cannot see behind because of pupils being very, they were not dilating also. तो ब्रेक ओपन करके अंदर जाना था एंड डिटैचमेंट का पता चल गया और and that's it. I mean, उसके बाद तो what is happening is the present. When did you get blind? Somewhere in the year 1992. 1990. And how old you were at that time? I was say about 25. 25. So was it a big setback? It was big setback. It was rather बहुत बड़ा setback था because glamorous world था. I was at the threshold of a very good career because that time fax, STD was very new. So communication, telecom
सर्विस में मेरा थोड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना था. Then I was pursuing my education in law and also chartered accountancy. So all that went down the drain. And मुझे though I was not very full sided partial में मुझे फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए होता था. I could play good football and I could bowl well as a cricketer, not that great because of the sight, but bowl well. So I was playing good sports also, and at the same time driving, passionate था, फन लविंग था. तो ये सब मिस हो जाएगा. एक्सेप्ट करने के लिए बहुत तकलीफ हुई. पहले 1-2 साल तो घर में ही रहा. आई वॉज फीलिंग वेरी बैड टू गो आउट. शेम लग रहा था. और बाद में जैसे ही थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ गई तो मैं गया. एक बार रेस्टोरेंट में बैठा था, मेरे फैमिली के पास वो रेस्टोरेंट था. मैंने बोला अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो काउंटर पे मैंने बैठना शुरू किया. और वो टाइम्स नोट्स पता चलते थे, तो कौन सी 100 की है, कौन सी 50 की है. एनी ब्लाइंड पर्सन इजिली मेक आउट. इवन कॉइन्स अभी तो वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो टाइम डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट लैंडमार्क्स. तो उसके लिए ब्रेल सीखना जरूरी नहीं था. फिर भी आई कुड अंडरस्टैंड. आई वॉज वेरी क्विक एट द काउंटर. तो बाद में मैंने फैमिली से पूछा ये रेस्टोरेंट आप मुझे दोगे क्या? तो उन्होंने बोला ले लो आप. तो मैंने बोला नहीं, हम वैल्यूएशन करते हैं और वैल्यूएशन करके बाद में जो जितना भी वैल्यू होता है मैं कमा के आपको दूंगा. तो ये सिचुएशन में मैंने जो लिया, फैमिली का सपोर्ट था, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. आई आल्सो पेड बैक माय फैमिली का पैसा. एंड एट द सेम टाइम जब भी ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गया था तो इतना सारा खर्चा हुआ था, तो वहाँ जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनके भी लौटा दिए थे. जैसे किसी के पास गए आपके 50,000 रुपए मैं लौटता हूँ, तो नहीं लेते थे, है ना, झिझक जाते, क्या आपको हमने ऐसे दिए, मतलब वेरी इमोशनल. तो मैं भी इमोशनल होता था. ये 50,000 आप रखो, मुझे चाहिए तो मैं लूंगा. इफ आई गिव यू आई विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट आई एम पेइंग बैक. वो मुझे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए या नहीं, तो ऐसा पूछ के ना इमोशनल बात करके आई एंडेड अप पेइंग ऑल द डेट्स बाय 3 years टाइम. ग्रेट. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब ये सब चल रहा था तो क्या आपका किसी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ एनकाउंटर हुआ था? आप किसी से मिले थे उससे पहले? क्या आपके पास कोई इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी? क्या आप किसी इंस्टीट्यूट में गए थे जहाँ ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन था? एक्चुअली मैं इग्नोरेंट था सब चीजों में. कि ऐसी भी कई संस्था होती है, संगठना होती है, या मैं इससे भी इग्नोरेंट था कि आप राइटर के साथ एग्जाम्स लिख सकते हो. आई वॉज वेरी इग्नोरेंट क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं था पहले. इसकी वजह से मैंने ज्यादा जानकारी भी नहीं लिया. कोई मुझे मिला नहीं, या मेरे पास कोई रोल मॉडल भी नहीं था. मतलब इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था. इट वॉज ऑल न्यू फॉर मी. जो बाद में मन में आया या दिमाग में आया या वट एवर आई फेल्ट कि मुझे ये करना है, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं. और बाद में एक बार ऐसे सोच रहा था कि क्या करे, ऐसे बीच के सामने बैठ के मुझे आवाज आ रही थी लहरों की, और मैं ऐसे ही बैठा था. मेरे दोस्त ऐसे चलने गया था, मैं ऐसे ही बैठा. तो वो टाइम मुझे ऐसे ही इंस्पिरेशन मिला कि चलो ये हो गया है ना, अभी ये लाइफ जी के देखते हैं, एंड लेट अस सी व्हाट. क्योंकि मैं कोशिश तो चल रही थी ठीक होने के लिए, लेकिन वो सब कुछ ऑल इन वेन था. ओनली इट वाज योर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन टू रन. इट वाज माय ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन. तो कैसे लगा आपको कि आप मैनेज कर पाओगे? घर वालों को कोई डर नहीं था कि भाई अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, अब ये विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर तो ये मैनेज नहीं कर पाया तो चलता चलाया जो बिजनेस है वो भी सारा बंद हो जाएगा? नहीं, सिचुएशन कैसा था कि जब भी मैं नॉर्मल मतलब जो पहले जो भी मेरी साइट थी उसमें मैं यंगेस्ट होने से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था. मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरे स्टडीज, मेरा स्पोर्ट्स, तो फैमिली में सबसे छोटा था. एंड आई वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल देन ऑल अदर एल्डर्स ऑफ माइंड. तो उसके वजह से सबको मेरे ऊपर भरोसा था, और सबको स्टेबलाइज करने के लिए भी मैंने खुद कोशिश की थी, और मेरा हाथ भी था. इसके लिए दे वर ऑल बिलीविंग इन मी. उनको बिलीव था कि मैं ये कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं मेरे लिए, मैं करूंगा ऐसा. ये कॉन्फिडेंस था. और मेरी माँ मेरे साथ में थी, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया, और वो साथ में थी. और पहले उन्होंने असिस्ट किया क्योंकि शी इज अ वेरी गुड कुक, और किचन का बाहर उन्होंने संभाला. और एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू स्टार्ट माय बिजनेस. सपोर्ट तो था. तो
क्या आज जब आप देखते हो कि हमारे इतने राइट्स हैं, हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है, डू यू रिग्रेट कि मैं और पढ़ सकता था, मेरे को कोई जॉब मिल सकती थी, तो जो चीजें मेरे शौक थे वो मैं पूरे कर सकता था, तो नहीं कर पाया इग्नोरेंट होने के कारण? डू यू रिग्रेट? आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि जो भी मुझे इन इग्नोरेंस में मिला वो नहीं मिलता था, बिकॉज मैंने कभी केन यूज नहीं कर दी। आई यूज्ड टू यूज समबडी एल्सेस शोल्डर। तो आजकल क्या करते हैं हम, बुक से किताबों से कम सीखते हैं एक्चुअली। हम सीखते हैं लोगों से, इंडिविजुअल से। जो भी हमें मिलता है उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, और हम व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू इनकलकेट। अगर अच्छी क्वालिटी है किसमें, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। इसके वजह से मुझे जो भी मिस हो गया उसका रिग्रेट नहीं। ओके, I could have learned JAWS. I could have learned, going to a center, learned physiotherapy. वो सब कुछ सीख सकता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक करते करते मुझे एक पता चला है कि यू गॉट टू बी ऑलवेज इन प्रेजेंट। पास्ट का सोच के प्रेजेंट खराब नहीं करना। अगर अच्छे मेमोरीज है वो सोच के जस्ट रिमेम्बर एंड ट्राई टू डू बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ और व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। कल अगर कल नहीं किया तो आज क्यों नहीं? राइट। That's what made me go ahead. फिर कब आप पहली बार किसी विजुअली इम्पेयर्ड से मिले? कब आपको इन चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ? जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था JCI में, तो पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसा ही गया था मीटिंग में, तो मुझे इनवाइट करा और देयर आई गिव सम सजेशंस। उनको पसंद आए, मुझे लगा रहा मैं कुछ कर सकता हूँ इस संगठन में। एंड आफ्टर दैट आई टुक अप अ प्रोजेक्ट फॉर देम टू रेज फंड्स। और गोवा में ऐसे डांसेस होते हैं, बिट शोज ऐसे होते हैं, वो मैंने ओपन एयर में ऑर्गेनाइज किया। आई वाज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हेल्प्ड बाय ऑल द मेंबर्स। वहां पे 1993 में वी रेज्ड अबाउट 3 लाख रुपीज। इट वाज अ बिग अमाउंट। अरे मैं बन सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया। इट वाज लाइक गेटिंग अ साइड बैक। तो वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं उनका प्रेसिडेंट बना। हर साल क्या होता है, जब भी इंस्टॉलेशन रहती है ना, नए अध्यक्ष आते हैं, तो आउटगोइंग अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट देना पड़ता है। एंड यू गॉट टू रीड द रिपोर्ट, एंड इट्स अ प्रीटी लॉन्ग रिपोर्ट, 45। और रिपोर्ट वो लोग सोच रहे थे मैं कैसा पढ़ूंगा, तो दैट आई गेव इट बाय हार्ट। दिल से काम किया था, तो दिल से इजी था मेरे लिए वो करना। और वहां से जो स्पीकिंग जो एबिलिटी थी वो समझ में आ गई। एंड देन आई started moving ahead in administrative letter of JCI। और वहां से बहुत प्लेसेस जगह जगह जाना पड़ा। वहां पे मोटिवेशनल टॉक्स करते करते मुझे भी आदत सी हो गई, और मैं वीडियोस सुनने लगा, अच्छे अच्छे स्पीचेस सुनने लगा, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करके जाना है। तो उसके वजह से आई स्टार्टेड गेनिंग इन कॉन्फिडेंस एंड गोइंग अहेड। तो मैं गोवा का अध्यक्ष बना, गोवा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद JCI इंडिया में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना। JCI है वो एक बेसिकली मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है that has to do Absolutely. nothing with the disability. They might run some programs for the disabled, right? Mainstream, हाँ, they might. Yeah. तो वही उसी तरफ मैं आता हूँ। ये इसमें काम करते करते आई वॉज इन ऑन हायर पोजिशन। एक मुझे जळगांव जगह है, वहाँ इनवाइट किया गया। दे इनवाइटेड मी बिकॉज दे वर फॉर्मिंग अ JCI ऑर्गेनाइजेशन देयर इन जळगांव, जळगांव चैलेंजर्स। उसमें सब किस्म के चैलेंजेस वाले मेंबर्स थे। जैसे देयर आई मेट डॉक्टर नीरज अरोरा, देयर आई मेट डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर। तो वहां उनसे मुलाकात हो गई, और वहां पे पता चला कि आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट फोन, जॉज स्टॉक्स के बारे में वो टाइम पता चला। देयर सो मेनी थिंग्स। तो वो आई विल थैंक द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग मी इनटू मीटिंग पीपल लाइक डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर, who is also a prodigy by in himself, because in spite of multi-disabled person, he is gave us a lot of things, and where I got confidence. और उन्होंने मुझे पूना में बुलाया एक बार। I sat for 8 days and learned how to use stocks. So पहले Symbian मोबाइल में हम इस्तेमाल करते थे, and from there then there was no looking back. Then it became a little easy when I started using mobile myself and independently, then things became very easy. But I'm being not very techno savvy, तो थोड़ा सा बैकवर्ड था इसमें। नाउ स्लोली बट श्योरली आई एम ट्राइंग टू
get into. And now we have easy applications like YouTube is helping us to listen to a lot of YouTube videos or anything that is now most That's of the. quite amazing. You were not aware of Joe's and stuff. Still, you Absolutely. became executive vice president of JCI. Is such a big organization. Exactly. You did administrative work. This is truly commendable. So, और वो टाइम मैं मानता नहीं था, एक्सेप्ट नहीं करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है. आई वाज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन ऑल द that's fine. You are behaving like a non-disabled person, but still you have to do the work, right? There were some Exactly. challenges. तो आपको टाइप करने की फैसिलिटी नहीं थी तब, क्योंकि आप जोश नहीं जानते थे. तो उसके बावजूद भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया. तो you are still a member of that. That's a really big achievement for a person who got blind and does not know anything about technology at that time and still became an executive vice president of organization like JCI is really commendable. Now I want to understand, and मैं चाहता हूँ कि आप हमारे listeners को बताएं, how hard is to run business? What are the opportunities? Actually, there is nothing hard. Everything is so soft. अगर आपका आउटलुक सॉफ्ट है, अगर आप खुद को चैलेंज करते हो, एंड ये करने से पहले, अभी रेस्टोरेंट एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत रेस्टोरेंट्स में गया, गुड, बैड, नाइस, ब्यूटीफुल, और उधर देखा कि कस्टमर्स किस चीजों में कंप्लेन करते हैं, और मुझे अगर कुछ चीज इस रेस्टोरेंट की कंप्लेन है तो क्या कंप्लेन है, वो सब लिस्ट डाउन कर दी, सब लिस्ट डाउन करते गया, बिकॉज आई टू ऑलवेज टेक समबडी और द अदर विथ मी who I could walk around. तो लिस्ट करते करते आई केम टू अ कंक्लूजन कि हमको ये नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी है जो कस्टमर को पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट दानिश लाइक्स, संदीप माइट नॉट लाइक, तो वो कैसे पता करना है. सो ऑल दिस ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, एंड देयर इज वन थिंग इन बिजनेस, यू हैव टू ऑलवेज बिलीव दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट. ये मन में सोच रख के आई वेंट अबाउट, एंड slowly पहले बहुत डिफिकल्टीज थी, where I lost also, made a loss also, लेकिन came up. Why I made a loss? क्योंकि for example अगर मैंने जब भी बजटिंग किया था, the cost of my project say is 10 lakh rupees, but I made the cost of my project 30 lakh. I made 3 times higher cost, उसका value, because I also covered up my losses for almost 6 months. Or whatever I wanted to do, I did with loss first. And that's how, slowly when things came to settle down, people started coming. I had maintained the staff, everything. और पहले दिक्कत हो जाती थी. People used to work for me for 8 hours, 9 hours and 10 hours and go. And I should not make that much business. बाद में एक ट्रिक आ गया, which was very easy. जो मेरे लॉन्ग टाइम वर्कर्स थे, उनको मैंने पार्टनर्स बनाया मेरे बिजनेस में. मेरा मैनेजर मेरे प्रॉफिट में शेयर लेता था. ऐसा किया, ऐसा सिचुएशन जमाया, एंड देयर एवरीबडी वाज वर्किंग ओवर टाइम 12 hours and all that, and that's why the business boomed, our services improved, because everybody felt मैं ओनर हूँ इस एस्टेब्लिशमेंट का. तो उस हिसाब से वो काम करते चले गए. आई कवर्ड अप माय क्वाइट अ बिट ऑफ माय लॉसेस एंड पेड अ लॉट ऑफ माय फाइनेंसर्स who had financed me. और उसके बाद और एक रेस्टोरेंट भी शुरू किया. सेटबैक्स तो आते रहते हैं, नाइट आफ्टर अ डे एंड डे आफ्टर अ नाइट, तो ऐसा होता रहता है. बट यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड बी द सेम and try to improve every time, whatever. What are the 3 tips always you find want out to give to the people who wants to start business? That can be any business. See, first thing is believing in yourself. आप खुद में बिलीव करो कि मैं ये कर सकता हूँ. अगर आपने सोचा कौन सा भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, मैं सक्सेसफुल हुआ विदाउट मी टेकिंग मच ट्रेनिंग, बट मैं बोलूंगा कि आप ट्रेनिंग ले लो. और in fact, if you are, say, you know to sweep the floor well, but how can you be a better sweeper? How can you be a more effective sweeper? How can within 10 minutes, if I can sweep one floor, within 10 minutes only I can sweep 50 floors? I'm taking a very basic example of being a sweeper, So उस हिसाब से आप अपने business में, if you think of getting this technique into the business, आप अच्छे हो जाओगे.
and don't consider your staff as your staff or as your servants. They are your friends and they are your partners. ये second thing है. First is training. Second is, once you start your business, your staff should be your partners. ऐसा मुझे लगता है. And they should have belongingness towards the business. तो उसके लिए जो भी आपको करना है वो करना है. And most important aspect is knowing your customers. Once you know your customers well, knowing in the sense what are their likes, what are their dislikes, वो क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, और कौन से कस्टमर, आपकी कस्टमर बेस क्या है, who you are looking at is very, very important. But for a visually challenged person, nothing is impossible. Because, see, what is, I always go by this slogan. We all know Helen Keller. She once said, what is worser than not having sight is not to have vision. Exactly. It is very bad to have no sight. अगर आपको विजन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो. तो अगर विजन रख के काम करोगे, दूरदृष्टि रख के काम करोगे, and practically I believe in one more slogan कि अगर आप पैसों के लिए करते तो आप पैसों के पीछे ही रहेंगे और you'll be running after money. You make yourself so big, so nice, so pleasing that आप जहाँ जाते हैं पैसा उधर आपको फॉलो करना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ अस हैव दिस टेंडेंसी कि हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, मनी के लिए ही करते हैं. वी बिकम मनी मेकर्स बट वी हैव बिकम बिजनेसमैन. एंड द सिंपल डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ मनी मेकर एंड अ बिजनेस, आई नो यू गॉट टू मेक प्रॉफिट, यू गॉट टू मेक रिलेशनशिप. अगर आप रिलेशनशिप करते हो तो पैसा अपने आप आ जाएगा. You create relation with your customer. You said 2-3 very important things. Yeah. One, you said कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ किताबों से सीखे, पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों से सीखना बड़ा जरूरी है. सेकेंड थिंग यू सेड कि जब आप शुरू कर रहे थे तो आप दूसरे रेस्टोरेंट्स में गए, आपने देखा वहाँ क्या कमियां हैं जो मुझे दूर करनी है, सो मेरे कस्टमर वो फेस ना करे. कि ये जो होती है आपकी जो सेल्फ रिसर्च होती है, एक आपका कि भाई मैं जाके ऑब्जर्व करूं, अगर कोई भी बिजनेस चलाना है तो उस बिजनेस में घुसूं, समझूं को क्या है और बाकी लोग उसमें क्या रन कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, मैं उसको कैसे दुरुस्त कर सकता हूं. इसमें एक खूबियां भी एग्जैक्टली. तो संदीप जी एक चीज आपने, मैं ये समझना चाहता हूँ, वर यू अ बिट फॉर्चुनेट दैट यू डिड नॉट फेस फाइनेंशियल इश्यूज? क्योंकि अगर आज की डेट में कोई डिसेबल्ड विजुअली इम्पेयर्ड बिजनेस के लिए जाता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, ऑल्दो गवर्नमेंट हैज कम अप विद मैनी स्कीम्स, लोन फैसिलिटीज है, हमारा एक्ट बहुत कुछ बोलता है प्रायोरिटी बेसिस पे, फिर भी उनको लोन नहीं मिलता समटाइम्स और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. उसके ऊपर मैं आपको फॉर्चुनेट नहीं, उसके ऊपर मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ. See, my father also was in business of transport, लेकिन वो बंद हो चुका था. जैसे रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होने लगा तो मेरी मदर बोलने लगी, आपके पिताजी ने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था तो आप उसे रिवाइव क्यों नहीं करते, एटलीस्ट उनका नाम तो रहेगा. तो माँ का आदेश था तो उसके लिए गया. वो टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे बिकॉज इट वॉज स्टून 2-3 ईयर्स. तो वहाँ अशोक लेलैंड फाइनेंस करके थी कंपनी, उन्होंने मेरी पहली बस फाइनेंस कर दी. एंड दैट टाइम यू वोंट बिलीव, मैंने 17% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट भरा था. और जस्ट बिकॉज आई ब्रॉट न्यू बस ऑन द रूट, वो बस पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड वी मैनेज टू पे द फंड्स बैक इन 3 or 4 years. और ऐसा नहीं कि मेरे पास फाइनेंस इजिली आया, मुझे भी डिफिकल्टीज थी फाइनेंस आने के लिए, लेकिन आई पेड थ्रू माई नोज. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसों की जरूरत है और उससे मैं एक 4% कमाऊंगा, तो मेरे फाइनेंसर दानिश है तो उसको मुझे, मेरी ड्यूटी बनती कि मैं 2% उनको दे दूं. तो इसकी वजह से मुझे वो फाइनेंस मिलने का भी थोड़ा सा इजी हुआ बिकॉज आई पेड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पीपल बिकॉज आई वॉज गेटिंग बेटर. कभी कभी वो सेटबैक भी हो गया, लेकिन मैंने प्लान भी किया, सेटबैक्स हो गया तो मैं वहां पे क्या करूंगा. एंड रिस्क तो आपको बिजनेस मतलब रिस्क तो है ही, बट यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क ऑलवेज. आपको उसके लिए भी प्लान करना है. वेरी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ बिलीविंग पर्सन दैट आई कैन डू दैट. एब्सोल्युटली. सो नो, वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग इज मिस्टेक्स तो हम करते हैं, जितने मिस्टेक्स मैंने भी बहुत सारे किए हैं, एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक. यू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी मिस्टेक दैट यू हैव एंड डोंट थिंक अबाउट इट, मैंने ऐसा किया होता तो
No, you can't think. You got to be fearless about your mistake. और business में fearless होना is a very very important quality. You got to be fearless. Right. और risk तो business और risk they go together. Making a होना mistake चाहिए. is not crime, but repeating the same is. Yeah, it is of course. ओके सो संदीप जी, अब ये बताएं हमें कि कभी आपने कहा कि प्रॉफिट ही बनाना एक कोई बात नहीं होती है, तो आपको हर चीज को देखना चाहिए. डिड यू हायर एनी डिसेबल्ड इन योर रेस्टोरेंट और डिड पीपल अप्रोच? कभी आपको लगा कि यार आई शुड आल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन फॉर्चुनेटली गोवा में मुझे ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड बहुत कम मिले who wanted to work in my restaurant. They were physically disabled, like people who had a leg problem and other things, or polio situation, who worked on my kitchen or in my utility department. But for visually impaired, I really had very rare people. Rare मतलब ऐसे समझो That's कि fine. मुझे Disabled, but you are open for the disabled. You hired disabled people. absolutely, yeah. And I would love to hire. ये भी है. In fact, I told one person, if you have any difficulty, come and sit with me. And even if there are some people who I've offered in NAB Goa, told them if you are literate और आप ये सारी चीजें मैनेज कर पाते हो, तो बिलिंग क्लर्क भी बन सकते हो, because there are softwares which are now for billing. वो है, लेकिन people did not come forward because of their fear in them. So now for visually impaired people, I feel we have to first raise their confidence. अगर आप सोचोगे, if we are say 100 visually impaired people, only 5% to 10% are only shining. Shining matlab they are very great like Danish, or they are very great like Dhananjay Boy, or they are very great like Shantanu Ladkar, or others, Bhavesh Bhatia and all that. They're very great. But there are plenty, matlab more than 95 out of 100 are still having no confidence in Have you heard about the dialogue in the dark hotel chain? I have not heard, but I want to hear that. Because somebody had mentioned it to me, but a couple talking about an experience. But I'm about to hear that actually. Okay, we'll talk about that hotel chain right after the show. So Yeah. now tell me, you have a foundation. You are a visually impaired. You started your own business, and you know what are the difficulties you have faced throughout your life. You enjoy it. You did not accept the time. You got to know. So by the passage of time, you had a lot of experience. Instead of starting an organization for the disabled, in 1990s or 2000, we have very less people to work for the empowerment of persons with disability. You started a foundation for the Gaushala. So I want to know two things. What was the motive behind starting foundation for the Gaushala or Gaushala Foundation? And why didn't you start a foundation for the empowerment of persons with disabilities? A very nice question. In fact, from 1992, I joined, soon after my disability, I joined JCI. वहाँ पे मैं सब कुछ देखता था. We used to visit home for the aged. We used to visit all the mentally retarded children's schools. All those things we used to do. But that time drive nahi tha, because financially I was also not that great enough. But as things grew and went on, I said in school मैंने सोचा था अगर आप मैथ्स करते करते पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो टेक हिस्ट्री, because change of work is best. तो उस हिसाब से I took up to a lot of extracurricular activities like JCI training, business के साथ वो भी करता गया. वो करते करते I came into yoga, art of living yoga. वहाँ पे मैं and मुझे एक important चीज है, I don't know, that is a God given talent, I would say, is whenever I go into anything, I like to involve myself to the fullest. So yoga में जब भी गया involved, I did 2-3 more programs, went up to Bangalore and all that. वहाँ से मैं वापस आया and I wanted to reach out to people. So that time, Swami Ramdev ji had started at Patanjali, and they started training teachers to do these courses free of cost for them all over the place.
So that time I joined one such course, and after becoming their teacher, conducted in my taluka itself, the taluka called Bardes, we have 33 panchayats and one municipality, where me and my partners, that is one by the name of Tulsidas Mangeshkar and Narayan Kamath, we all, with them, I managed to reach out to each and every gram panchayat of my taluka and my one municipality that we have. तो वहाँ पे हमने बहुत classes करते गए. After that, there was where I reached a peak, became the leader of the taluka and handed over the proceedings to others, because I believe in, I really believe in, you have to go up, higher up, and make place for somebody else or create second line leadership. तो वहां से वापस बिजनेस में और एक्स्ट्रा फोकस देने लगा. एंड बाय द टाइम वी वेर ऑल देयर, जो भी मेरे साथ लड़के थे वो टाइम पे, वी गॉट टुगेदर एंड वी स्टार्टेड अ गौशाला, बिकॉज स्ट्रीट कैटल्स बहुत दिख रहे थे, बहुत मिल रहे थे, एंड मेनी पीपल cattle were also getting injured, and people on the bikes also getting injured because of the street cattle. Rainy season में nights में हमको दिखाई नहीं देते, and people used to fall. So that was one, taking street cattle to गौशाला was our main aim. और वो करते गए. At the same time, धनंजय भोये, उनके साथ मुलाकात करने के बाद उनके साथ एक्सेसिबिलिटी में काम करने लगे, ऑर्गेनाइज किया programs थोड़े बहुत अपने visually impaired लोगों के लिए. And I am also part of his company called Sugamma Digital Solutions, and we have got Sugamma Foundation also, which we are about to start. So वो foundation anytime start हो मतलब on books it is, on paper it has not started, लेकिन we are doing a lot of programs with Dhananjay Boye for visually impaired people. But that thought is definitely there. It is not there. It is not there. लेकिन काम किया, but never boasted about it. No, that's great. तो actually इस फील्ड में जितना हम काम करें उतना ही कम है. तो actually मैं इस बारे में एक ही बात बोलता हूँ कि visually impaired or visually challenged or physically challenged, whatever it may, they are not बेचारे. Yes. So I don't want this thing to happen to them. Our work is to motivate whoever we can, because we know everybody is a prodigy. Everybody is come with some talent or the other. और वो उस talent में छा सकता है. And you have to find out that talent and boost that confidence. या आप इसमें अच्छे हो. You become, as I said about sweeping, you are sweeping the floor, you can be the best sweeper in the world. आप कोशिश करो ऐसा. This type of motivation अगर हम दे सकते हैं visually impaired के लिए, it will be nothing like it. So that's what I'm personally looking forward for. When we started Radio Udaan back in 2014, तो जब भी मेरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनने को मिलता था, उसमें या तो हैंडीकैप्ड या वेलफेयर्स, ये वर्ड ही ज्यादा यूज होते थे. एंड आई वाज पिस्ड ऑफ कि you आप कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हो, and then you are saying it's a welfare society. Why can't it be empowerment? You are empowering person. So you are absolutely right. So we started our trust is Udaan Empowerment Trust. So see, whatever we are doing, it's like you said, is solution foundation. Either we are providing solution or empowering people by providing solution. So there is nothing like welfareism. And अनफॉर्चुनेटली हमारे ही सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये शब्द यूज कर रही है, वेलफेयर. मुझे एक बात याद आ रही है, मतलब ऐसे मुझे एज यू आर टॉकिंग, हमारे भारत में वी विल हैव अप्रोक्सीमेटली अबाउट 12% of our population is physically challenged. It may be that much or it may be even more than that. Yeah. So out of for example, say it is 12% or 15%, तो 15% ऑटिज्म को पकड़ के 15 से भी ज्यादा होंगे, तो 15% डेफिनेटली 5% would be the blind population, जो people who are visually impaired, definitely. So you look at the situation of physically challenged people, they are the best. वो बोलते हैं कि अरे क्या अचीव किया, ये किया, वो किया, but as you spoken about welfare and empowerment,
आप देखो, हमको अगर कोई इलेक्शन लड़ना है तो वी हैव टू कम इन द जनरल कैटेगरी, हमारे लिए कोटा नहीं है। एंड अगर आप जैसे या धनंजय बोये जैसे या भावेश भाटिया जैसे या कोई ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं आपके, यू टेक सो मेनी नेम्स, असुदानी है, सो मेनी नेम जो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड, उनको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड में, दैट इज पॉलिटिकल वर्ल्ड में अगर स्थान मिलता, वो क्या कर सकते थे? बिकॉज दे आर रियली ग्रेट पीपल। एज वी हैव कोटा सिस्टम फॉर एवरीबडी, कौन सी भी कास्ट ले लो आप, कौन सा भी माइनॉरिटी ले लो या वो ले लो, सब कुछ ओबीसी है, दे हैव गॉट अ कोटा, but there is nothing, no quota for when we have 15%, more than 15% population, उनके लिए कोटा नहीं है किसी भी चीज में। Okay, you will have certain sanctions in the income tax sector and all that stuff, but nothing more than that. We are fighting for that. Yeah, but very important is we are empowered already. Yeah. And we don't want, that's why I was saying, people are having sympathy towards a physically challenged person, but nobody empathizes with them. मैं एग्जैक्ट मीनिंग तो हिंदी में मेरी हिंदी तो उतनी अच्छी नहीं है, बट सिंपैथी और एम्पैथी में मैं एक ही फर्क बोलता हूँ। कैसे है कि सिंपैथी इज फीलिंग सॉरी फॉर समबडी, और हमको बुरा लग रहा है, अरे ऐसा क्यों हुआ ये वो, एंड एम्पैथी इज बीइंग विद दैट पर्सन एंड शेयरिंग हिज प्रॉब्लम्स, शेयरिंग, उनका दुख शेयर करते हैं, दैट इज एम्पैथी, वी आर एम्पैथाइजिंग। So I think people are sympathizing more with us, not empathizing. Empathy नहीं है. Right. They are not empathizing. वो हमारे साथ, like there used to be a common saying, give a fish. गोवा में fish बहुत खाते हैं. इसके लिए give a fish for one for a person free. You will feed him for a day. अगर आप fishing करना उनको सिखाओगे, तो you will feed his entire life. Absolutely. वो हमारे साथ नहीं हो रहा है. वो हमारे साथ नहीं हो रहा है, and that is the aspect. And somehow what our visually impaired people who are doing for our brethren, जो हमारे साथ जो colleagues हैं, उसके बारे में वो बोस्ट नहीं करते। जैसे मैंने इधर भी मेरे बायोडाटा में मेंशन नहीं किया कि आई एम इन्वॉल्व इन accessibility foundation or doing work on helping others to do work on accessibility or organizing accessibility seminars in Goa with NAB and all that. That I never mentioned because that is our work and that is our duty, and I don't want to boast about it. No, that's fine, but at least putting it in your bio, perhaps you are educating the next person. Yeah. That exactly you have told me. Next time I'll make it a point to, whatever I do work. Because there are many people who never heard about accessibility. If they might read in your bio, so they would, sometimes they may ask, what is accessibility? They can give a thought. Yes, there is a thing like this. Exactly. आप सही बोल रहे हो. And next time I will, there is one line that I am working in an accessibility solutions company. That's it. Part of a company which works in accessibility. So उतना ही है, but not much. दो चीजें जानना चाहता हूँ. एक, back in 1990 and today, what has changed from the disability perspective? And second, how did you manage your time? You are a member of JCI, is a big organization, then you are running your organization, your couple of restaurants, your foundations, and you are involved in this accessibility thing, and then you are going for marathons. So how do you manage your things? So there are two things. See, business, as I told you, is not about money but relationship. तो अगर हम अपने business से, अपने horizon से बाहर नहीं जाते हैं, तो we are not gaining. क्योंकि हमको what we require more to meet more and more people. तो अपने रेस्टोरेंट में बैठ के तो वो नहीं होगा, कस्टमर आएंगे जाएंगे रिपीट हो जाएंगे. We got to meet more and more people. So we got to join social organizations like JCI, Lions, Rotaries. Yeah, if you are passionate enough, like what I do, to join yoga organizations. I've joined Patanjali and doing work for them. Like I'm a part of a foundation that we have started, Gaushala. Because of that, taking stray cattle and creating that cattle manners show hota tha. मतलब everywhere people are meeting with accident. So cattle भी अभी कम दिख रहे हैं, at least in our area.
they are taken to, and at the same time creating, वहां से हम जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं लाइक जीवामृत, अगर वो सोल्यूशन जो हमने बनाया वहां पे, दैट लिक्विड विच इज स्प्रेड ओवर आवर गार्बेज, देयर इज नो डर्टी स्मेल विल नॉट कम, इट विल बी नाइस एंड वो डिकम्पोज होने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे काउडांग के ऊपर, खेत के लिए मैन्योर, ये बहुत कुछ करते गए एंड दैट इज गोइंग ऑन। सो क्रिएटिविटी इज देयर, बट अगर हम एक ही जगह पे बैठ के ये करते हैं तो बाकी हम पाएंगे, पैसा तो कमाएंगे लेकिन पाएंगे कुछ भी नहीं। सो वी हैव टू बी फेमस, दिस इज जस्ट वन लाइफ बॉस, एंड अगर आप ये लाइफ जिएंगे नहीं तो क्या फायदा, बिकॉज नहीं तो हम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, हमारा काम है सुबह दुकान खोलना और शाम को दुकान बंद करना, ये नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। एंड यू हैव टू, एक मैंने जैसे बोला कि लीडरशिप इज सच दैट हम अगर लीडर है तो वी हैव टू क्रिएट सेकंड लाइन लीडरशिप, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एंड मे बी दैट एस्पेक्ट हैज मेड मी एक रेस्टोरेंट से दूसरा रेस्टोरेंट, नाउ मैनेजर्स आर माय पार्टनर, अभी भी ग्रो करने का सोच रहा हूँ। सो मोर एंड मोर पीपल मे जॉइन मी। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है, वो भी forcibly I had started, but I have empowered two gentlemen who are taking care and they are sharing profits with. So at the same time enterprise create करने का कोशिश करता हूँ। नहीं तो रोज employment नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, all these things we complain against the government. Right. And what has changed from the disability perspective? What has means, I think because now things are accessible to all of us, especially if you take visually challenged people. After, I would say, for me, it must have been after 2005 that I was properly accessible to phones, to certain extent, computers. And then later on, improvement in communication, technology and all that stuff, technically and technologically. We are now more empowered that we can use anything and everything. Like, for example, the phone is become so essential in your hand. You can use it for many things because of amount of things available on your phone. So accessibility has made things so easy for, especially visually impaired people, to live their life very nicely, right, and very comfortably and very normally, and also become very ambitious and also learn. That's more important, because till you die, you're always learn. So at the age of 52, you started taking part in marathons. Yes, right. And you have completed more than 35. Exactly. And कुछ 10 किलोमीटर की हैं, कुछ 10 से ज्यादा। तो ये आपका पैशन है, शौक है? What inspired in that age? Sorry for calling you senior citizen. It's not like that. Age is, for me, age is just a number. मैं उसके बारे में सोचता नहीं. And I still feel that I'm still in my teens or 20s. क्योंकि जब भी walking करना शुरू किया, and I was moving around with a friend of mine, Sandeep Marojkar उसका नाम है. I used to move around with me, and मुझे लगा पहले एक राउंड मार के लैप मार के देखेंगे. I was not even able to do quarter of the lap. I used to get tired. बाद में एक लैप हुआ, 2 लैप हुआ, 3 लैप हुआ, ऐसे होते रहे. Then there was a small race for about 5 kilometers. So everybody said, okay, let's run. And one person was running with me. Either he holds my hands or he guides me. तो वहां से 5 किलोमीटर जब ही कंप्लीट की, मैंने बोला, अरे it was such an amazing experience यार. तो उसके बाद there was no looking back. Then I did 10 kilometers, then I did 21 kilometers. I did not go beyond that. That was my capacity. And then started taking part in all the races. Then there were invitations just because I was visually impaired and people used to invite to take part. तो मुंबई मैराथन भी हो गई, सातारा एक नाइट मैराथन करके वो हो गई, बेलगांव में मैराथन हो गई. तो वहाँ पे which was out of the state had good fun and enjoyment. And last, actually I would have done more than 50-60 races, but unfortunately lockdown के वजह से वो races सब बंद थे. But I kept on running and improving myself. सूर्य नमस्कार भी वैसे ही पहले 1-2 भी होते थे. Now most of the days, at least 4 to 5 times in a way, I do 108 Surya Namaskar every day morning. Every day morning I go to yoga class, which I have created my own. And I enjoy doing all this.
And just because of all these aspects in the morning, that entire energy is there to go ahead and to take part in business, take part in other activities. And now, since I have learned to manage the way I have at the moment, having partners, so I don't require to go in the morning and maybe in the evenings for some time, do briefings, taste the staff, sometimes go as a customer and manage, understand what are the difficulties there in the restaurant and try to improve on. I don't have to sit at the cash counter, or I don't have to be all the time in the kitchen. So that has अभी been डरने लगता one है thing. यार कोई धोखा हो जाएगा. नहीं, वही बोला ना, अगर वो फियर है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क. इसके लिए शेयर I have given a percentage to all my staff. That you told, yeah. Did you face So any they're difficulty like in your owners. matrimony? So since we have kind of software available. Yeah. Sorry, Not you can yet. complete. Yeah. We are, no, generally what happens is now in business, we are so lucky that we've got all the time nice people. And there are certain bad people also. Due to them, problems happen. But they've taught you. You got to thank them that they were in your life. They taught you. So that's what I was taken. And one more thing, after my problem, I got married after my mother. My wife plays a big role in supporting in business, in the sense she doesn't come very often to restaurant, but that moral support is like big part. My sons are also well settled, and they are doing one is just finished his career in hotel management, and the other is doing big time photography. So he's most of the time involved in traveling around the country, or sometimes outside the country, depending on the kind of events he has. So all said and done, my family life is so exciting and so nice, and I'm really lucky to have. That's lovely. My wife Sandhya, who's been there with me, and first she did not know to ride a cycle, also a little bit of that. But after she learned to drive the car, and we have traveled together so much. So within this short span of marriage, about 25 odd years, पहले 5 साल तो वो गाड़ी नहीं चलाती थी, उसके बाद last 20 years she has driven more than 5 lakh kilometers. So driving, so that's lovely. So that's what she's always there, and we travel together. अगर बॉम्बे जाना है, पूना जाना है, तो वो खुद अकेली ड्राइव करती है. Now children are driving, but she is been a good companion, where we have our little bits of fights. That is also with love, and ups and downs are there. But the great time is that she's been a very, very, very important part of my life. तो क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? Oh yeah, see, the most important message I would like to give is everybody in this nice country of ours called India, Bharat. We are lucky, fortunate to be born and brought up here, because Japan will give you perfect timings. They believe in timings. Germany will give you good engineering. England will give you good etiquettes. America will give you marketing styles, like they will have Father's Day, Mother's Day, everything that comes from it. What happens in India is we have bhaichara, we have values, we believe in our spirituality, and there's a lot of meaning towards everything that we do. Our language, especially Sanskrit, is so great. अगर हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आ ई उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला. वो that is so important. अगर आ ई बोलते हो आप, that itself is an exercise, and it's healing to all of us. Your love, everything is so nice. Every अक्षर जो होता है, every letter जो होता है, so if you pronounce that well, it is so nice. र, क्ष, ज्ञ, ये सब कुछ अलग ही है, and उसके वजह से हम लोग इंडिया में अगर वो यही चीज सीखते हैं अच्छी तरीके से, संस्कृत सीखते हैं, या all these things, the letters that we have in our Hindi, Marathi, or Devanagari script or Sanskrit, वो इतनी अच्छी है कि हम लोग उसमें ही healthy हो जाते हैं, and it is making us better. We have given to this world something called yoga, and yoga is been taken very seriously by other countries, and we are playing it little easy. We are taking it very easy in India. But all said and done,
We are born in a country which was in the past the best, and it is best, and we are so lucky that we have everything. What is our role as an individual, as a citizen, for us to make ourselves, we are very equipped with knowledge. जो भी knowledge, अगर आप योगा करते हैं, you have to know yoga. अगर आप sports में हो, we have to know sports. Whatever field we have chosen, we have to be best in that. We cannot wait for the government to give us facilities. We cannot wait for the government to give us jobs. We cannot wait for others to do something for us. मुझे लगता है कि we have to do it for ourselves. मैंने कुछ मेरे लिए करना चाहिए. अगर मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ. And when we improve और हम खुद को सक्षम बनाते हैं, well equipped बनाते हैं, तो ही हम दूसरों की मदद कर पाएंगे. You cannot think of any foundation if our foundation is not good. So that's what my message is for every individual. Become great, become best in your own little thing that you do. Be the best in whatever you do. So automatically country will become the best in the world. Absolutely, yes. Thank you so much, Sandeep ji, for your valuable time. Really enjoyed talking to you. Oh, it is a pleasure indeed. And pleasure is also mine. Believe me, this is my first ever audio interview. Most of my interviews have been either audio-visual or physical. And first time I'm talking on a radio channel. And I'm so lucky that first channel has to be Udaan. I'm so happy, Danish, for you, and salute to you for starting such a channel. And I have no words of praise, but I know you are great. Sorry to use the word great. You are greatest. No doubt about it. You can do wonders. And I wish this channel is the best available radio channel in India. All the best to you. And I know we will have lot of subscribers internationally also. And last but not least, I can only say from today, I belong to your belong to your channel, radio channel. Thank you, Danish, for inviting me. Thank you so much for your kind words. तो listeners, आज हमने बात की संदीप जी से, जो गोवा में रेस्टोरेंट चलाते हैं. उनकी फाउंडेशन है, एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड वर्क में है. इस एज में भी वो मैराथन करते हैं, एंड ही इज मोर यंगर देन अस. तो आइए, जो एक थॉट है, आप सबको मालूम है कि किस तरह जॉब्स ड्राइड अप हो रही हैं. हमें रिसर्च करने के बाद एक बिजनेस का आइडिया के ऊपर भी सोचने की जरूरत है. दैट वाज द मोटिव ऑफ दिस इंटरव्यू. आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगी. अगले सप्ताह फिर किसी और पर्सनैलिटी से मिलूंगा. तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय.